Hello everyone, welcome to the Answer Academy MCQ meets mnemonics, and we are starting our session on the Porphyria, yes, Porphyria mnemonics on the basis of the mnemonic request centers. Yes, so in this session we are discussing the Porphyria. This is very important topics. Yes, so this is also a super important topic for the every exam, NEET PG, ini-cet and the FMGE. Yes, so please comment about the audio visual so we can start the session. Yes, this audio is good. So first, we are taking the ini-cet previous year question. The lead toxicity causes the acquired form of the porphyria by inhibiting which enzyme? Yes, this question asked in the ini-cet exam. So lead toxicity. So as you read the lead को यदि आप पढ़ते हो तो it has in a spelling E. E means ferrochelatase, and it has LED मीन्स LAD मीन्स इसको घुमाएंगे तो क्या बनेगा ALD मीन्स ALA डिहाइड्रो डिहाइड्रेटेज ALA डिहाइड्रेटेज yes so lead causes the porphyria by inhibiting this enzyme. Yes. Now another question. This lead poisoning also causes the basophilic stapling by inhibition of the 5-nucleotidase. 5-nucleotidase. This question is also asked. Now, so type of the porphyria and the enzyme defects. Yes. So ALA synthesis, the enzyme defect, ALA synthesis, the porphyria is X-linked porphyria. Now ALA dehydratase, so we already discussed ALA dehydratase, D आता है, D means क्या बनेंगे यहाँ पे lead, so lead poisoning में ये inhibit हो जाता है. And in acute intermittent porphyria, acute A कौन सा letter होता है अल्फाबेट में? A is the first letter, or you can say intermittent I's look like the one. So A फर्स्ट लेटर है और I कैसा दिखता है? वन जैसा. तो आप यहाँ पे बना सकते हैं acute intermittent porphyria में क्या इनहिबिट होगा? फर्स्ट वाला एंजाइम. फर्स्ट मीन्स यूरोपोरफायरिनोजन फर्स्ट सिंथेटेज. और यू कैन से HMB. HMB मीन्स हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन सिंथेसिस. Hydroxymethyl bilane first, or you can say uroporphyrinogen first. So just remember acute intermittent porphyria. A is a first letter, I look like one. So यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला एंजाइम. Yes. Now next is uroporphyrinogen third synthesis. So you can say third लेटर कौन सा होता है अल्फाबेट में? थर्ड लेटर होता है यहाँ पे C. और C पर आप बना सकते हो congenital erythropoietic porphyria, और you can say yes. So C is the third letter. So थर्ड वाला एंजाइम आपको लिखना है. So uroporphyrinogen third synthesis, congenital erythropoietic porphyria. Now, next is uroporphyrinogen decarboxylase. So decarboxylase is the D in the spelling. Yes, porphyria cutanea tarda is end with also T. Is also end with the D. So दोनों D और D को मैच करना है. Uroporphyrinogen decarboxylase ended with a D, and porphyria cutanea tarda ended with the D. Yes. Next is coproporphyrinogen oxidase in the hereditary coproporphyria. So as the name suggests, कोप्रो में कोप्रो आ जाएगा तो आपको ये याद रहेगा. Now protoporphyrin oxidase in the variegate porphyria. So protoporphyrin oxidase in the variegate porphyria. So PO in the VP. You can remember. Now ferrochelatase में E आता है, ferro ER, and erythropoietic protoporphyria both has the ER. Yes, and lead also has the E. So in this way you can remember the enzymes. Yes, enzymes in the different type of the porphyria. Yes. Now what is the sequence of the occurring of the porphyria? Yes. तो इसमें अपन देख सकते हैं. Yes. So you can say, you can remember this sentence: all congenital porphyria comprises variable presentation. So all means, yes, all means acute intermittent porphyria, congenital means congenital erythropoietic porphyria, and porphyria means porphyria cutanea tarda. Comprises means corpoporphyrin, variable means variegate porphyria, and presentation means protoporphyria. Yes, so you can also remember this sentence. Now individual porphyria. Yes, so we will see summary also. We will see the summary slides for the total porphyria also. Now, so first we are taking porphyria cutanea tarda. Yes,
Porphyria, cutanea, tarda. So Porphyria, cutanea, tarda is a C4 you can remember C4 common. So this is commonest type of the Porphyria, your first one liner. Then it has a C for the cutaneous. So this is only cutaneous Porphyria, not having the neurovisceral symptoms. Now it ended with the D. Porphyria, cutanea, tarda. Tarda में क्या आता है D. So किससे किसमें end हो रहा है D से. So D4 you can remember uroporphyrinogen D carboxylase. ये वाला डिफेक्ट इसमें हो जाएगा. Yes, and this is autosomal dominant. Inheritance is autosomal dominant, but is it is having multiple inheritance like sporadic, autosomal dominant. Yes, and unknown also. So यहाँ पे sporadic ये ज़्यादा होता है. And yes, so next you can say yes. So C4 most common, D4 decarboxylase, D4 dominant, and D4 it's seen in adult. D4 sporadic में भी क्या आता है? D. Yes. Now exacerbated by the hepatotoxic substance as a yes, this is not a hepatic porphyria. This is a cutaneous porphyria. Yes, so hepatotoxic yes, this is a cutaneous porphyria. Yes. Now, so yes. So this porphyria can be precipitated by the hepatitis C or HIV virus, hepatitis C or the HIV virus. Yes, so we can remember Porphyria cutanea tarda. Porphyria cutanea tarda is a C in the spelling. इसके spelling में क्या आता है? Porphyria cutanea, cutanea, C for cutaneous, C for hepatitis C. So it is associated with the hepatitis C. Can you tell me any other disease, any other cutaneous disease associated with hepatitis C? Yes, lichen planus. Yes, क्रायोग्लोबिनेमिया. ये सारी चीजें किससे एसोसिएटेड होती है? हेपेटाइटिस सी से. यस. नाउ सो अकोमुलेशन ऑफ द यूरोपोरफायरिन, फोटोसेंसिटिविटी, हाइपरपिगमेंटेशन, ये सब यहाँ पे मिलता है. यस. सो this you can see the this type of the picture showing the photosensitivity blisters. ये सब यहाँ पे आपको मिल सकते हैं. Now type of the Porphyria cutanea tarda, क्या क्या इसके type होते हैं? So type 1 is sporadic, type 2 familial means autosomal dominant, type 3 also autosomal hereditary, and type 4 is a toxic Porphyria by the halogenated hydrocarbon, or you can say C4. C4 क्या होता है? कार्बन, हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन. C4 हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी से भी ये रिलेटेड होता है. यस. नाउ नेक्स्ट पोरफायरा इज एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरा. यस, ऑडियो इज गुड. Yes. So next is acute intermittent porphyria. Yes. So you can say acute intermittent porphyria. So as the name suggests, acute presentation, intermittent porphyria. So I means eyes look like the minus means absent, and P for photosensitivity. So photosensitivity is absent means the cutaneous feature is absent. Only neurovisceral symptoms are present. Yes. So multiple P in this. Yes. So this is also pre-test question. 8P किसके निमोनिक होते हैं वो भी यहाँ देख सकते हैं. So port wine color urine is there, pain in abdomen is there. Pain in abdomen means neurovisceral symptoms. Precipitation by the drugs and alcohol, psychological or you can say psychiatric symptoms, polyneuropathy is also present. So neurovisceral symptom, neuro means peripheral neuropathy, visceral means pain abdomen, so neurovisceral symptom are present. Then again you can say P4 post puberty, so adult onset होता है. And P4 porphobilinogen deaminase, ये वाला enzyme होता है. P4 you can say pulse, so tachycardia is most common sign, and pain abdomen is most common symptoms. Again, P4 you can remember urinary porphobilinogen is most important screening test. Yes, and which enzyme? AIP, acute intermittent porphyria. I कैसा दिखता है? 1 जैसा. So 1 वाले enzyme यहाँ पे आ जाएंगे. Yes, treatment is hemine and glucose. Treatment is hemine and glucose. Yes, now time for the active recall. Type in the chat box. What is the 8P mnemonic for the acute intermittent porphyria? Yes, everybody attending this session live, जो भी सेशन को लाइव अटेंड कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे. यस, कितने पी आपको याद आते हैं? जितने भी पी आपको याद आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. यस. Yes, so which P associated with this acute intermittent porphyria? Yes, type in the chat box. Yes, so you can see. Yes, इतने सारे P से associated होते हैं. Now, so we will see this summary slide in the last. Yes, अभी यहाँ पे देखते हैं.
So you can divide porphyra as a three is a erythropoietic porphyra and five is a hepatic porphyra. So three type of the porphyra is erythropoietic, five type is a hepatic. Yes. So three is look like E. So yeah, yes. So कौन कौन सा होते हैं erythropoietic जिसमें आता है E. Yes, congenital erythropoietic porphyra again E. Erythroprotoporphyric porphyra. Yes, and X-linked porphyra. Now hepatic rest of the five is a hepatic porphyra. Now इरिथ्रो नाम में क्या आता है इरिथ्रो सो व्हेन यू राइट द इरिथ्रो इज ई आर को क्या लिख सकते हो ए आर की तरह से सो मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव यस एंड फॉर द एक्स लिंक mode of inheritance is X-linked, obviously as the name suggests. Now, ADP porphyra means yes, ALA dehydrogenase porphyra. So name में क्या आता है? In the name is AD, but this is not a AD. This is not autosomal dominant. This is the autosomal recessive. Rest of the porphyra is autosomal dominant. So just remember erythro in the name. Erythro ER means the AR, so autosomal recessive. X-linked protoporphyra, so X-linked and ADP ALA dehydrogenase name containing AD, but this is not AD. This is the autosomal recessive, and rest of all porphyra are autosomal dominant. Now, next is neurovisceral. Yes, neurovisceral porphyria. So as the name suggests, neuro means peripheral neuropathy. So neuropathy more present in upper limb than the lower limb, and the visceral means the visceral symptom like the pain abdomen. Yes, so yes, so this is neurovisceral when there is a neurovisceral symptom present. Yes. Now, so cutaneous porphyria you can divide it as a blistering and the non-blistering. So blistering वाले में क्या आता है जिसमें भी C आता है C for cutaneous. So you can remember C for cutaneous and C for porphyria cutanea tarda. Yes, CEP. Yes, and HCP and variegate porphyria. Yes, and non-blistering porphyria are containing protoporphyrin in name. Protoporphyrin किसमें आता है? Yes, एथ्रो EPP and XLP ये दोनों चीजें इसमें आ जाएगी. Yes, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है. The HCP and VP has the both type of the porphyria cutaneous and the neurovisceral. तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे जो HCP है HCP and VP has a both type of the symptoms visceral and cutaneous. So we can remember C for cutaneous, V for visceral. So it has both type of the characteristics. Yes, दोनों तरह के मिलेंगे यहाँ पे neurovisceral भी मिलेंगे cutaneous भी मिलेंगे. Yes. So now, so next we look at the yes summary slide यहाँ पे लास्ट में देखेंगे. Yes. Now, yes. So you can see in this picture. Yes. So कितने तरह के porphyria होते हैं? There is a 8 type of the porphyria. X-linked porphyria, ALA dehydrogenase. Yes. Acute intermittent porphyria. Yes. Yes. And CEP, PCT, HCP, VP, and EP. Variegate porphyria and erythropoietic porphyria. Yes. So how we can remember? Just remember this sentence. Excel all acute congenital porphyria having variable ends. Yes. So excel or accept all acute congenital porphyria having variable ends. Yes, you can remember this sentence. So this is a type of the porphyria. So NB means yes. His audio is good. Yes. So NB means non-blistering, non-blistering. So first वाला क्या होगा non-blistering and last is also non-blistering. So XLP is non-blistering and EP is the non-blistering. So just remember first and last is non-blistering. Yes. Now, so second and third is having the neurovisceral symptoms. Yes, neurovisceral symptoms. And fourth and fifth is a blistering disorder, blistering symptoms. And we already see HCP and BP has a C and P. So C for you can remember cutaneous, C for cutaneous and V for visceral. So this having both the symptoms, neurovisceral and a blistering means the cutaneous. दोनों symptoms यहाँ पे मिलेंगे. So in this way, you can easily remember which is having neurovisceral symptom, which is having cutaneous symptom, which is blistering, which is the non-blistering. So just remember first and last non-blistering,
then again two neurovisceral, then blistering, then next two is blistering, then the common. Yes. Now, yes. So next is the inheritance. We already discussed X-linked. So X-linked inheritance. Yes. And इरिथ्रो वाले में क्या होगा? ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस. यस. एंड एक के नाम में आता है एडी, इसके नाम में आ रहा है एडी, बट एडी नहीं है, ये क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव. रेस्ट जो बच गए वो सब क्या होंगे? ऑटोसोमल डोमिनेंट. यस. नाउ, सो इसमें एक और चीज ध्यान में रखेंगे, द फर्स्ट स्टेप इन द पोरफायरा इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड लास्ट थ्री. फर्स्ट एंड लास्ट थ्री कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में. बाकी जब बाकी बची हुई सब क्या कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में. सो फर्स्ट एंड लास्ट थ्री इन द माइटोकॉन्ड्रिया. यस. यस. सो नेक्स्ट और फीचर अपन यहाँ पर कंपेयर करते हैं. Yes, so first one and last three on the mitochondria. Rest of the steps in the cytoplasm. Now, so the enzymes here we already discussed. इन XLP ALS2 गेन ऑफ द फंक्शन म्यूटेशन और चिल्ड्रन में होता है, ये अपन ने पहले से यहाँ पे डिस्कस कर लिया है. नाउ, सो स्क्रीनिंग किसकी करते हैं? स्क्रीनिंग किसकी कर सकते हो आप? XLP में आरबीसी प्रोटोपोरफायरिन की कर सकते हो, नेक्स्ट टू में यूरिन प्रोटोपोरफायरिन की कर सकते हैं, नेक्स्ट थ्री में प्लाज्मा प्रोटोफायरिन की कर सकते हैं, और लास्ट में अपन आरबीसी प्रोटोपोरफायरिन की कर सकते हैं. सो आरबीसी, वाई आरबीसी? इरिथ्रोपोइटिक प्रोटोपोरफायरा. इरिथ्रो मीन्स आरबीसी, तो यहाँ पे किसकी करेंगे अपन? आरबीसी की. यस. फिर उसके पहले के तीन है उन सब में प्लाज्मा, और उसके पहले में यूरिन, और उसमें आरबीसी. यस. सो दिस इज द समरी स्लाइड्स फॉर द पोरफायरा. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन सेव, और आई विल अपलोड द पीडीएफ ऑन द टॉपिक ग्रुप. यस. नाउ, so next you can say the visual mnemonic for this. Yes, so acute intermittent porphyria, acute intermittent, you can say acute intermittent, this eyes look like one. Yes, and this enzyme is also having the one. So दोनों में I common होता है. Yes, and this is porphyria cutanea tarda, due to the tarda is a D and euro D enzyme. So इसमें कैसा दिखता है? This is look like a virus, hepatitis C virus, hepatitis B virus. So this is associated with hepatitis C, hepatitis B and C and HIV. Yes. Now next you can predict the hereditary coproporphyria. इसका भी आप एंजाइम यहाँ पे बता सकते हैं. वेरीगेट में VO PO वाला निमोनिक भी यहाँ पे आप देख सकते हैं. यस. तो सोरेट बैंड कितने पे होता है? ये भी वन लाइनर पूछा हुआ है, 400 नैनोमीटर. यस. वुडलैम्प की वेवलेंथ कितनी होती है? वी ऑलरेडी डिस्कस द इंटीग्रेटेड वेवलेंथ इन वन ऑफ द अवर सेशन. Yes, please comment what is the wavelength for the wood lamp. This is also already asked, and which wavelength is used for the treatment in the phototherapy. Yes, and wavelength of the lasers used in ophthalmology. This is important. Yes, we already collected 10 plus wavelength in our one of the our session. Yes, wood lamp की कितनी wavelength होती? कलर ऑफ द वुड लैम्प पर भी सेशन बनाया हुआ है, निमोनिक सेशन. यस. तो 365 नैनोमीटर होती है, यहाँ पे 400 नैनोमीटर है. और फोटोथेरेपी में कितनी होती है? फोटोथेरेपी में क्या काम में आता है? ब्लड, एबीओ ब्लड ग्रुप. तो ए से 4 निकाल सकते हो, बी 6 जैसा बनेगा, 0. सो 460 नैनोमीटर. यस. नाउ, सो दिस कैन बी आस्क्ड एज IBQ. अभी जो प्री टेस्ट था उसमें भी आया था. यस, दिस फोटोग्राफ आल्सो प्रेजेंटेड इन योर प्री टेस्ट. सो दिस इज कंजेनाइटल इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरा. कंजेनाइटल इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरा, इसको बोलते हैं गुंटर्स डिजीज. यस, गुंटर्स डिजीज. एंड सी इज द थर्ड लेटर. सो थर्ड वाला एंजाइम यहाँ पे अफेक्टेड होता है, और काफी सीवियर फॉर्म भी इसकी हो सकती है. यस. So what is the symptoms? Repeated inflammation, vesicle and bulla is there. Yes, photodermatosis, hypertrichosis. ये सारे symptom यहाँ पे मिलने वाले हैं. Yes. Now, next you can say onycholysis, erosion of the terminal phalanges, destruction, changes in the pinna and the nose. So you can say this destruction of the terminal phalanges. Yes, pinna and nose का destruction or Gunter disease. Yes. So drug precipitating porphyria. This question can be asked. कौन कौन सी drug precipitate करती है porphyria का? This barbiturate is important. This is already asked. Yes, you can remember this mnemonic boost sharp. Yes. So barbiturate, OCP, orphanidine, sulfonamide, tetracycline, chloramphenicol, carbamazepine, halothane, hydralazine, alcohol and the phenytoin. एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा. Yes. Yes. So mainly you have to remember this table for the summary of the porphyria.
Yes, so which is the most common type of the porphyria? Yes, type in the chat box. Which is the most common type of the porphyria? मोस्ट कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है जिसमें आता है सी, सो पोरफायरा कुटिनिया टार्डा, पी फॉर पॉपुलर, सी फॉर कॉमन। यस, सो पॉपुलर कॉमन मीन्स पोरफायरा कुटिनिया टार्डा। यस, गुंटर्स डिजीज किसको बोलते हैं? विच पोरफायरा आल्सो नोन एज अ गुंटर्स डिजीज? यस, टाइप इन द चैट बॉक्स, किस पोरफायरा को गंटर्स डिजीज बोलते हैं? यस, वेरी गुड। यस, यस, सो गंटर डिजीज सीईपी को बोलते हैं। यस, लेड इनिबिट विच विच एंजाइम, लेड किस किस एंजाइम को इनिबिट करता है? यस, yes, so now time for the, yes, lead inhibit the which enzyme? Yes, so lead की स्पेलिंग में क्या आता है? आर, ई से फेरोचिटलेज बन जाएगा, डी से एंड होता है तो यहाँ पे एल डिहाइड्रेटेज बन जाएगा। यस, सो यहाँ पे आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। यस, सो विच पोरफायरा इज अ स्पोरेडिक? स्पोरेडिक इनहेरिटेंस किसका होता है? स्पोरेडिक। Yes, those attending this session live can type in the chat box and use your active recall memory. Yes, so sporadic is Porphyria cutanea tarda. Sporadic, and this is also autosomal dominant. So type 1 is sporadic, type 2 is also autosomal dominant, and type 4 is related to the, yes, toxic. Yes, so what is the treatment for Porphyria cutanea tarda? Treatment में क्या करते हैं? Phlebotomy, low dose hydroxychloroquine, because hydroxychloroquine act as the chemical sunscreen. Yes, so we can advise this. And जो लास्ट वाला porphyria था, the erythropoietic porphyria, where we can give the beta carotene. Yes, so beta carotene उसके ट्रीटमेंट में अपन देते हैं. Yes. So thanks for the participation. Please solve the question on the Porphyria topic and make a small flashcard. Make this entire Porphyria topic in one single page. Yes, and you can also add the heme synthesis pathway also. Yes, the story of the Sita Gita already uploaded on the topic group. Just type the Porphyria on the topic group. There is a story of the Sita and Gita, stethoscope. Yes, and घर से बाहर जाना, घर से अंदर आना, ऐसा स्टोरी है वो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं. Yes. So thanks for the participation.